Okay, so let's start the today chapter that is permutation and combination. ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और कंसेप्ट को समझेंगे. राइट. सो आई गेस आप सभी ने ये फार्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा. एनसीआर. एनसीआर मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. सी, ये फार्मूला का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअल मीनिंग ये हुआ, मेकिंग आर डिफरेंट group, right, from n group. मतलब आपके पास n डिफरेंट ग्रुप है, राइट, उससे 8 डिफरेंट ग्रुप बनाना है. तो हम कौन से फार्मूला का यूज करेंगे? एनसीआर का. एनसीआर फार्मूला में कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है हमें. लाइक इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. सेकंड, we can form r distinct group from n distinct group. Okay. Third one is, it is a formula for selection. Okay. And last one is no repetition of group. No repetition of groups. Right. So these are some important points we have to careful when we are solving these problems. Okay. So हम start करते हैं first problem से. Right. First problem. First problem ये है कि let's suppose 30 peoples का एक ग्रुप है, राइट, और 30 पीपल्स आर इन ए हॉल. अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा उन 30 लोगों के बीच में, राइट. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन. तो इसको अप्रोच क्या है सॉल्व करने का कि लेट सपोज देयर इज अ मैन, राइट, देयर इज अ वन पर्सन हियर. सो दिस बोथ आर टू पर्सन. So the two person can make one handshake, right? Make one handshake. मतलब कि हम जितने तरह से 30 लोगों में से लेट सपोज हम दो दो लोगों का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए, राइट, दो दो लोग का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए. तो आउट ऑफ दिस 30 पीपल जितने हम ग्रुप बना पाएंगे उतने हैंडशेक होंगे, राइट. तो 30 लोगों में से दो दो का ग्रुप बनाने का कितने वेज हो सकते हैं? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? 30C2, right. So making different possibilities, different combination from this 30 combination, right. So this is called NCR formula. See, NCR means making r different group from n group, right. So basically we are forming a group of 2 person out of this 30 person, right. So every group will do a handshake one time, right. So this 30 person can do a handshake of 30C2. 30C2 means 30 factorial divided by 2 factorial into n minus r, that is 30 minus 2 factorial, right. So 30 factorial divided by 2 factorial into 28 factorial. It means 30 factorial will be written as 30 into 29 into 28 factorial divided by 2 factorial into 28 factorial. 28 cancel, और ये 30 29 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1. So 30 into 29 divided by 2, it will become around how much? So 30 into 29 by 2, that is 15 into 29, right. So 15, 445. Yes, 445. So this is the answer. I hope it is clear. Not 4, it will be 435, sorry, it will be 435. Yeah. So 30 लोगों के ग्रुप में से हमने दो दो का ग्रुप बनाया और दो दो के ग्रुप एक बार हैंडशेक करेंगे. तो कितने ग्रुप्स बना सकते हैं आउट ऑफ दिस 30 people? That many number of handshake will do, right. So in this way you can solve this problem. Next question, right. Next question is,
let's suppose you have 15 straight line, right? 15 straight lines are there. So we have to find out that maximum number of intersection point of this 15 line, maximum number of intersection points of this 15 lines. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सी, आपके पास 15 स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये 15 की जो 15 लाइन है वो कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है। तो लेट सपोज कि अगर आपके पास दो लाइन हो, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? 1 पॉइंट पे, राइट? इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते ना। तो दो लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर लेट सपोज कि थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन, तो थर्ड जो लाइन है लेट सपोज ऐसे इंटरसेक्ट करती है ये दोनों लाइन को, तो आप क्या देखोगे कि लेट सपोज ये ए लाइन है, ये बी लाइन है और ये सी लाइन है, राइट? ए बी सी, ए बी जो है एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? बी और सी जो है वो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, और सी जो ए है वो भी एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब जितने बार हम दो लाइंस को चूज कर रहे हैं, जितने वेज में चूज कर रहे हैं, वो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? वन मीन्स how many ways we are choosing two lines, they are going to be intersect in one, they means they have one intersection common point, right? So out of this 15 straight line, 15 straight line से हम दो लाइंस को कितने पॉसिबल वेज में चूज कर सकते हैं? So how can we find that? 15C2, right? This is the number of ways in which we can select two straight line out of this 15 lines, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, इन ग्रुप। सो दो दो लाइंस के हमें ग्रुप बनाने हैं स्ट्रेट लाइन के, और कितने वे में बना सकते हैं? 15C2। और ये 15C2 जितने वेज में बनाएंगे वो सारे ग्रुप एक बार इंटरसेक्शन करेगा आपस में, इज 15C2। अब 15C2 का वैल्यू कैसे? सो सी सिंपल, ऊपर क्या लिखना है आपको? 15 फैक्टोरियल, राइट? और नीचे लिखना है 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 दैट इज 13 फैक्टोरियल। अब आप देखोगे कि 13 फैक्टोरियल यहाँ भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 15 इंटू 14। 15 इंटू 14, ये 2 फैक्टोरियल 2 7, ये कितना हो जाएगा आपका? 105, राइट? होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, so we'll do enough number of questions, no need to worry. Okay, so let's do one more question. Similarly, let's suppose instead of 15 straight line, let's suppose we have 14 circles, right? 14 circles. So now the question is that in how many ways these 14 circles can intersect with each other, right? Maximum number of intersection point of 14 circles. ये कैसे निकालोगे? तो लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, राइट? लेट सपोज ये सर्कल है, करेक्ट? और ये एक दूसरा सर्कल हो गया, करेक्ट? सो दो सर्कल जो हैं वो आपस में कितनी बार कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? या एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम सर्कल को बस टच करा के ऐसे टच करा दें तो एक पॉइंट पे ही ये टच किया, राइट? बट हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सो टू सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट 2 पॉइंट, राइट? At 2 point you can see here, this is the first point. Okay, yeah, this is the first point and this is the second point. So when you select two circles out of these 14 circles, they have means two circles will intersect each other at 2 point, right? 2 point. Let's suppose one more circle, let's draw here one more circle. Okay, one more circle. Okay, so now you can see that now the intersection point, let's suppose this is circle A, this is circle B, this is circle C, right? So circle A and circle B can intersect at 2 points, right? Circle B and circle C intersect
at these 2 points, and circle A and circle C can intersect at these 2 points, right? So every pair, when you select every pair, the maximum number of intersection possible is 2, right? So out of these 14 circles, you can select how many group of circles? 14C2, and these 14C2, these are the numbers of pairs you can make from 14 circles, and every pair can intersect at two points, right? At 2 points. So number of points or number of intersection possible, maximum number of intersections possible among these 14 circle is 14C2 into 2. The value is 14 factorial divided by 2 factorial into 12 factorial into 2. 12 cancel, ये बचेगा आपका 2 से 2 cancel, 14 into 13. 14 into 13 value will be 14 10 जा 140 or 14 3 जा 42 means 182, right? So this is the answer. Clear? Okay, let's check. Streaming is, yeah, we are going good. Okay, now let's jump to the next question. Next question is uh, maximum number of, okay, maximum number of intersection point of, maximum number of intersection point of 20 triangles, right? 20 triangles. So uh, how can you solve this? Maximum number of intersection point of 20 triangles. So first you have to select two triangles, right? First you have to select two triangles. So let's draw triangle here. Yeah, this is first triangle, right? And we have to make another triangle but in different direction. So we can draw here only. And this is just ignore the background noise of, and this is the second triangle, right? This is the second triangle. So basically two triangles can intersect maximum at how many points? You can say here 6 points, right? 6 points. Okay, so maximum number of intersection point of two triangle, that is triangle A and triangle B, is 6 points. Okay, so whenever we select two triangles out of these 20 triangles, they are going to be intersect at maximum 6 points. So in how many ways you can, in how many numbers of different combination you can make out of this 20 triangles? So that is 20C2, correct? 20C2. Now each combination will intersect at 6 points. Okay, each combination. So these are many combination you can form out of these 20 triangles, and one combination can intersect at 6 points. So the number of combination into 6 will be give answer, right? So what will be the answer? So 20 into 19, right, by 2 into 6. I hope it is clear कि मैंने कैसे लिखा है इसको, right? So 18 factorial will cancel each other. This will be 10. So it will be around 1140. Okay. So hope this is clear, right? So we have solved till now we have solved 4 problems. First is how many numbers of hands are possible in a hall, right? So the number of combination you can form into one. How many straight lines? Maximum number of intersection points of 15 lines. So this is also simple. Okay, this is also simple. Next question was intersection point of 14 circles, and now intersection point of 20 triangles. Now let's jump to the next question. Next question is maximum number of intersection point of 12 circles, right? 12 circles,
and 18 straight line. 18 straight lines. Okay. So basically हमारे पास 12 circles है और 18 straight lines है. In how many ways these are going to be maximum number of intersection points निकालना है. Okay. So how can you solve this? So we have 12 circles. So we already know that two circles intersect at maximum 2 points, right? Okay. Two lines can maximum intersect at 1 point. Okay. Now what we have to do is that we have to find out that one circle and one circle and one line can intersect at how many points? So this is circle and this is line. So maximum intersection will be 2 for one circle and one line. So let's suppose you have 12 circles and 18 straight lines. So one circle, two circle, one straight line, right? Let's assume another circle also, third circle. Okay, so these are intersection points. Okay, so अगर मैं और भी ज्यादा फिगर बनाऊं तो it will be going to be very complex, right? So you can see here that so number of intersection point will be maximized in such a way that two circles can intersect maximum at 2 points, right? Intersect at maximum 2 points. Two lines can intersect maximum at 1 point, right? And one circle and one lines can intersect maximum at 2 points. So यहाँ पे क्या करोगे आप कि आपके पास 12 सर्कल्स है. 12 सर्कल से दो सर्कल सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 12 से 2 and these two circle will intersect at two intersection point, right? One line out of this 18 straight line, how we can form combination of two straight line. So two straight line will intersect at 1 point, right? Now one circle, the number of ways in which we can select one circle is 12 ways, and number of ways in which we can select one straight line is 18 ways, right? And this will give two intersection point, right? So the sum of all this value will give the answer, right? So this will be 12c2 into 2. It will be around 1 minute. Yeah. So 12c2 into 2, it will be 132. Okay. And 18c2 will be around 18 into 17. 18 into 17 by 2, that will be 17 into 9, that is 153. And this will become 12 into 18 into 2, right? So 12 into 18 into 2, that will be around 12 into 2, 36. 36 10 ja 360 and 72, 432, right? So the sum of all these three, 132, 153 and 432 will give the actual answer, right? Actual answer. So in this way you can solve the problem of selection. Hope it is clear, right? So the we have used till now we have used the formula of NCR. NCR means n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, right? So the meaning of NCR is making r different group from n different group. Okay, from n different group. See here, different, distinct or different. It is very important to understand from n different group. Okay, agar if n different group are not there, then we will solve how can we solve that type of problems in next upcoming video, right? So basically we are making r different group. Now the thing is that order is not important when you are using NCR formula, right? This is a selection method, selecting two peoples out of 30 people, selecting two circles out of this many circles, right? So this is a selection and no repetition of group. No repetition of group means that let's suppose you five circles are there, right? And you C1, C2, C3, C4 and C5. Now you are selecting two circles, so C1 and C2.
So out of these 5 circles, how many ways you can select 2 circles? 5c2. 5c2 means 10, right? C1, C2, C1, C3, C1, C4, and C1, C5, right? 4. For from this you can make 4. From this you can make 1, 2, 3. 3. C1, C2, and C2, C1 both are same, right? So that's that that is the reason we have mentioned no repetition of group. Means C1, C2, and C2, C1 is same. Okay. So it is very important to understand these 4 points during when you are solving the problems of permutation and combination, right? So okay, let's move on to the next question. Let me erase this all. Okay. Hmm. Now let's jump to another question. Let's suppose okay. Now let's jump to the second part, that is second. See, basically, we are studying tool of counting, right? Second tool of counting. So one tool of counting was NCR. Okay, NCR. Now the second tool of counting is multiplication. Multiplication. Okay, second tool of counting is multiplication. Okay. So let's suppose अगर मैं पूछूं कि 2 डिजिट के कितने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, ठीक है? तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए लेट सपोज यू हैव 2 स्पेस, राइट? तो यहाँ पे आप 0 to 9 कुछ भी रख सकते हो, और 1 डिजिट पे, और 10 पे आप 0 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, राइट? क्योंकि 0 रखोगे तो वो 2 डिजिट का नहीं होगा. So here you have 1 to 9. Okay. So this place can be filled in 9 ways, right? And this place can be filled in 10 ways. So both the places can be filled into 9 into 10, that is 19 ways. So these are the number of 2 digits you can form. अब आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, 1 to 9 कुछ भी सिलेक्ट करो, राइट? लेट सपोज 9 सिलेक्ट किया, यहाँ पे 0 to 9 कुछ भी सिलेक्ट करो, 0, तो एक नंबर 2 डिजिट का फॉर्म हो रहा है, दैट इज 90. तो जितने तरीके से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं और इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, राइट, उतने नंबर हमारे बनेंगे, करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड टूल ऑफ काउंटिंग, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ओके. नाउ 1 minute, just this also here, clear, clear. ठीक है. नाउ लेट सपोज कि आपके पास एक डिजिट है F4UR, 4, ठीक है? अब लेट सपोज कि 4 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो ओके. सो आप क्या लिख सकते हो? F4UR, F4RU, F, right, FROU. So these are the ways
in which you can arrange. तो अगर आपके पास 4 डिस्टिंक्ट नंबर है या फिर लेटर है, राइट? So the number of ways in which you can arrange this is 4 factorial, right? That is called NPR. Okay, this is called NPR. NPR. Similarly, 5 हो, if similarly let's suppose 5 मैंने लिखा है यहाँ पे. The number of ways in which you can arrange this 5 is 4 factorial. Okay, instead of 5, let's suppose अगर यहाँ पे एटीट्यूड, अब कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो? तो आप देखोगे कि लेट सपोज ये मैंने एटीट्यूड लिखा, अगर ये T1 T2 होता तो ये एटीट्यूड और ये एटीट्यूड सेम होता अगर मैं अरेंज करता तो, राइट? बट यहाँ पे क्या है, दोनों T1 T2 सेम है, अगर डिफरेंट होता तो ऐसे काउंट करते हैं, राइट? 1 2, बट सेम है तो जितने बार कोई लेटर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, जैसे T 3 बार रिपीट हो रहा है, राइट? तो 3 बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन एटीट्यूड दैट इज 8 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. जितने बार सिमिलरिटी वाले आपको दिखेंगे लेटर्स, उतने से हमें डिवाइड करना है. क्यों कर रहे हैं, समझते हैं इसको. लेट सपोज FOUR था, राइट? FOUR से कितने हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो FOUR और FORU ये सेम है, सॉरी ये डिफरेंट है, राइट? अगर इंस्टेड ऑफ FOUR FOUU होता, FOUU, तो ये वाला R की बजाय हम U लिखते और यहाँ पे R की बजाय instead of R we will write U here. So this both are count as one, right? तो इसमें क्या है कि देखो, अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, U 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 अलग-अलग कॉम्बिनेशन को एक काउंट कर रहे हैं. इस पूरे को काउंट करना है, नंबर ऑफ कितने इसमें लेटर्स हैं डिवाइडेड बाय कितने बार रिपीट हो रही है U. और कोई भी लेटर जो भी रिपीट कर रहा है, अगर लेट सपोज होता FOUURR, तो यहाँ पे क्या करते, 4 की वजह 6 फैक्टोरियल हो जाता, डिवाइडेड बाय जितने बार ये रिपीट हो रहे हैं उतना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल U के लिए और 2 फैक्टोरियल R के लिए. तो ये आपका हो जाता है आंसर, करेक्ट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक सफिशिएंट. इसमें क्या है, आप देखोगे F कितनी बार आया, 2 बार, I 1 2 2 बार, राइट? सो पहले आपको काउंट करना है कि ये टोटल कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 आपके पास लेटर्स हैं, राइट? 10 लेटर्स मींस 10 फैक्टोरियल. अगर सभी अलग होते तो हम 10 फैक्टोरियल वेज से इसको परम्यूट कर पाते, मतलब इतने हम तरीके से इसको अरेंज कर पाते, राइट? अभी इसमें क्या है, 2 बार F है, 2 बार I है, राइट? तो इसके लिए क्या करना है, 2 F के लिए हमें नीचे लिखना है 2 फैक्टोरियल और 2 I के लिए हमें नीचे लिखना है 2 फैक्टोरियल. तो ये होगा आपका आंसर, करेक्ट. Now let's jump to the next question. Okay, so next question is that कि let's suppose 10 students are there, okay, in class. In how many ways they can be ranked such that A is greater than B? Okay, so 10 student 1 to J, sorry, A to J, right, are there in a class. In how many ways they can be ranked if A is greater than B? तो आपके पास लेट सपोज कि
क्लास में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस है, राइट। अब आपको इन स्टूडेंट्स को ऐसे रैंक करना है कि हमेशा ए का जो रैंक हो वो बी से ग्रेटर हो, करेक्ट। ए का जो रैंक हो वो बी से ग्रेटर हो। कितने वेज में हम कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका रैंक हो गया। अब कितने तरीके से हम रैंक कर सकते हैं? रैंकिंग का क्या है कि हमेशा ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ओके। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज कि आपने दो रैंक सेलेक्ट किया, कोई भी दो रैंक। सो आउट ऑफ दिस 10 रैंक्स, दो रैंक को सिलेक्ट करने का कितने तरीके होंगे? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9 इंटू 5, राइट, दैट इज 45 वेज। मतलब 45 वेज में हम दो रैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दो रैंक आप कोई भी सिलेक्ट करो, लेट सपोज 9 10 सिलेक्ट किया, तो ए को हमेशा बड़ा रैंक मिलना चाहिए। मतलब ए आएगा 9 पे और बी जाएगा 10 पे। सिमिलरली 1 2 सिलेक्ट किया, ए आएगा इस पे और बी आएगा इस पे। सिमिलरली 4 3 सिलेक्ट किया, ए आएगा 3 पे और सिलेक्ट कर सकते हो। उतने तरीके से हमेशा ए इज ग्रेटर देन बी होगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10C2, क्लियर, 10C2। सिमिलरली लेट सपोज अगर ए ऐसा हो जाए, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। अब अब कैसे करोगे आप? तो अभी आपको तीन सिलेक्ट करना है, कोई भी तीन सिलेक्ट करोगे, लेट सपोज 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी। मतलब कोई भी तीन सिलेक्शन के अगेंस्ट में आपको एक ही पॉसिबिलिटी होगी ए बी सी को अरेंज करने की, करेक्ट। तो हमारे पास 10 रैंक है, 10 रैंक में से तीन रैंक को करोगे आप, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2, करेक्ट। 3 टू 5, ओके, 120। सो बेसिकली आप 120 बेस होगा जिसमें से आप किसी भी तीन रैंक को चूज कर सकते हो। लेट्स 4 5 6, तो 4 5 6 पे ए आएगा, ए 4 पे, बी आएगा 5 पे और सी आएगा 6 पे। तो 120 वेज होगा। जितने वेज में आप रैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हो उतने वेज में ही आप एबीसी को रैंक कर सकते हो, क्लियर। तो ये तरीका होगा सॉल्व करने का क्वेश्चंस। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाँ, let's suppose you have 9 digit from 1 to 9, 9 digit from 1 to 9। अब पूछा जा रहा है आपसे कि थ्री डिजिट हाउ मेनी थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ दिस 9 डिजिट। तो कैसे होगा? लेट सपोज आपके पास थ्री डिजिट है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। अब आपके पास 9 डिजिट है, क्लियर। इसमें एक कंडीशन क्या है? 100 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज ग्रेटर देन वंस। मतलब ये वाला जो नंबर होगा यहाँ पे वो बड़ा होगा इससे और इससे। ये कंडीशन लगा दिया हमने। अब देखो आप 9 डिजिट में से कोई भी थ्री डिजिट सेलेक्ट करो, तो कितने वे में तरीके में कर सकोगे? 9 से 3, 9 से 3 मतलब 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 7 बाई 3 इंटू 2, 3 4 84, मीन्स 84 वेज में आप इसमें से आउट ऑफ दिस 9 डिजिट थ्री डिजिट को सिलेक्ट कर सकते हो 84 तरीके से। अब 84, लेट सपोज कुछ भी नंबर आपने सेलेक्ट किया, 4 5 6। अब आपको थ्री डिजिट बनाने का एक ही तरीका है, क्या? 654 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 1। कोई भी आप
3 डिजिट अज़्यूम कर लो, ठीक है? आपको एक ही तरीका से वो नंबर बनेगा। 9 है, 0 नहीं है, करेक्ट, ठीक है, 0 नहीं है, 0 होता तो बट 1 टू 9 है तो आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उसके अगेंस्ट में एक ही तरीके से हम 3 डिजिट के नंबर को बना सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया नहीं होता, फिर आंसर कुछ अलग आता। बट ये क्राइटेरिया है तो आंसर एक ही आंसर आएगा आपका 9C3। अंडरस्टूड? ठीक है, ये क्लियर है? विल सॉल्व other question in next videos. Thank you.